Today's topic is spread spectrum modulation techniques. So before starting the topic, we will study that what is the need of स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन. आखिर स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन यूज़ क्यों किया जाता है और फिर समझते हैं कि ये होता क्या है. तो मिलिट्री कम्युनिकेशंस में इंफॉर्मेशन का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है. मिलिट्रीज़ वगैरह में जो कम्युनिकेशन होता है तो उसमें द इंफॉर्मेशन विच इज़ ट्रांसमिटेड it needs to be very secured, which means that an unauthorized user is never expected to access the information. That means it should not be allowed to interfere the communication happening there by any means. The second problem or the second need, sometimes it happens that a hostile transmitter means say which can be used by terrorists. It can jam the transmission between two parties. That means a communication or transmission is taking place. The hostile transmitter can jam that transmission or communication between the two parties. To avoid this condition of intentional interference, which is also known as jamming. Why intentional interference? Because the third party's motive is to block the transmission between the two people who are communicating, and so this type of intentional interference is known as jamming. So we need to build a system or channel which is immune to any type of such external interference, or in short a system that is immune to jamming signals. Not only speaking about military communication but also for non-military communications, sometimes unintentional interference is caused by a user who is transmitting its information through a channel which is already being used. Means at the same time, at the same frequency, many users are accessing the channel. What happens that the information of one user gets mixed up or interferes with the information of the other user. So this type of interference is unintentional but it is present in the channel. So we also need to eliminate this type of unintentional interference as well. All these problems which we just discussed can be removed by using a technique, and that technique is the technique which we are going to study today, and is known as spread spectrum modulation. That means by using spread spectrum modulation we can overcome all the three problems which we discussed right now, like the problem of security, the problem of intentional interference which is also known as jamming, or the problem of unintentional interference. Also there is problem of self interference in communication, and that self interference is due to the multipath propagation. Now what is the scenario in this case? Multipath propagation gives rise to self interference. What do we mean by this? See, the signal take multiple paths while it travels over a communication channel. That means from different paths it is traveling through the channel to reach the desired end. So what happens, the signal components which is following different path lengths, it will result in a dispersed signal at the receiver. Why dispersed signal? Because that signal is taking different paths, and different paths corresponds to different lengths. So when such type of multipath signals are received at the receiver, it causes self interference. This type of self interference, which is due to multipath propagation, can also be suppressed by using the spread spectrum modulation technique. So what is spread spectrum modulation? In spread spectrum signal, the signal will occupy a larger bandwidth compared to a normal signal. That means spread spectrum, we are going to spread the spectrum of the transmitted signal as compared to the original signal, or as compared to the information signal, which means that the bandwidth of the transmitted signal will be more compared to the bandwidth of the information signal. That is why it is saying spread spectrum, because we are spreading the spectrum of the information signal in order to make it
more secure in order to make it less prone to any type of interference, whether it is intentional interference, whether it is self interference due to multipath propagation, or whether it is unintentional interference. For all these purpose, we will be spreading the bandwidth of the signal and then we will be transmitting it. Now, how does this spreading takes place? This spreading takes place by using spreading codes. These spreading codes are generated through a special type of generator known as pseudo-random sequence generator, and these spreading codes are also known as pseudo-random codes or pseudo-random sequence. In short, we call it as PN sequence, where P stands for pseudo and N stands for noise. Now, why we are calling these spreading codes, which are generated from a spreading code generator, or we are generating PN sequence from a PN sequence generator, why we are calling it as pseudo noise sequence? Why? Because the nature of these signals are pseudo random in nature. That means it appears like random noise, but actually it is not noise. That is why the normal receiver cannot demodulate the spread spectrum signal. मतलब जो आपका pseudo noise sequence है, जिसको आप स्प्रेडिंग कोड या सूडो नॉइस जिसको आप स्प्रेडिंग कोड या सूडो नॉइस सीक्वेंस भी कह रहे हैं, वो देखने में तो एज रैंडम नॉइज़ लगेगा किसी भी थर्ड पार्टी को, लेकिन एक्चुअल में उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत डिटर्मिनिस्टिक होता है, क्योंकि या जो उसको पैटर्न होता है उस सीक्वेंस का वो फिक्स होता है, क्योंकि वो एक फिक्स लॉजिक सर्किट के थ्रू जनरेट होकर आ रहा होता है. वो लॉजिक सर्किट जिससे वो जनरेट होकर आ रहा होता है, दैट इज़ नोन एज PN sequence generator. So for the third party it will appear to be as random as noise, but basically it is not random. That is why the name is given pseudo noise. That means वो noise की तरह शो तो होगा, नॉइज़ की तरह दिखेगा तो थर्ड पार्टी को, लेकिन एक्चुअल में वो नॉइज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई भी थर्ड पार्टी उस कोड को डिकोड नहीं कर सकती है. So basically this spreading is done by the help of these spreading codes, which are technically known as PN sequence codes or PN codes, and the full form of them is given by pseudo noise codes. Now we use two techniques in spread spectrum modulation. The first technique is digital technique, which is direct sequence spread spectrum, and the second technique is analog technique, which is known as frequency hopped spread spectrum technique. So we will discuss both these two techniques in detail in the coming lectures. So here we have the basic block diagram of spread spectrum communication system. The working of this communication system can be understood easily. See, first we have a multiplier circuit, which is represented by a cross in the block diagram. The input to this multiplier circuit, or the input to this multiplier, is the binary NRZ sequence BT. मतलब जो भी बाइनरी सीक्वेंस हमें ट्रांसमिट कराना है वो सीक्वेंस हम अपने मल्टीप्लायर के एक इनपुट पर दे देंगे. ये बाइनरी सीक्वेंस जो है NRZ फॉर्म में है, मतलब जो आपका सीक्वेंस रहा होगा ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में, उसकी हमने NRZ एनकोडिंग कर दी है. NRZ एनकोडिंग मीन्स नॉन रिटर्न टू ज़ीरो. ज़ीरो को हमने नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया है और वन को हमने पॉजिटिव पोलैरिटी से रिप्रेजेंट किया है. Now see, the second input to this multiplier is the PN sequence. ये वही PN sequence है जिसको अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि हमारे स्प्रेडिंग सीक्वेंस होते हैं या स्प्रेडिंग कोड्स होते हैं जो हमारी ओरिजिनल सिग्नल की बैंडविड्थ को स्प्रेड कर देते हैं, और फिर ये स्प्रेडेड सिग्नल हमारा चैनल पर ट्रांसमिट किया जाता है. सिग्नल को स्प्रेड करने से एडवांटेज क्या होता है कि वो सिग्नल हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और वो इंटरफेरेंस को फाइट करता है, यानी किसी भी तरह के इंटरफेरेंस को मिक्स होने से सिग्नल में रोकता है, सिग्नल की स्प्रेडिंग करने से. ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर आपका कोई नैरो बैंड सिग्नल होता तो उसका स्पेक्ट्रम आप देखते हैं कि बहुत नैरो बैंड मिलता है.
तो अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस करना चाह रही है तो वो उस नैरो बैंड में उस फ्रीक्वेंसी रेंज को अगर पता कर ले रही है क्या है, तो बहुत आसानी से उस नैरो बैंड सिग्नल में वो इंटरफेरेंस कर सकती है। लेकिन अब एक सिग्नल हमारे पास है जिसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, तो उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, वाइड बैंड होगा। अब उस वाइड बैंड सिग्नल में इंटरफेरेंस की चांस जो है, इंटरफेरेंस करके सिग्नल को करप्ट या लॉस करने की जो चांस है वो हमारी बहुत कम हो जाएगी। इस तरह से जो स्प्रेडेड हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो वाइड बैंड स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी इंटरफेरेंस हमारा कम हो रहा है। इंटरफेरेंस से एरर की चांस कम आ रही है और हमारी सिक्योरिटी बढ़ जा रही है। तो हम ये देख रहे थे कि अब देखिए जो मल्टीप्लायर था उस पर हमने दोनों इनपुट दे दिया, एक पे हमारा बाइनरी NRZ सीक्वेंस था और दूसरा इनपुट हमारा PN सीक्वेंस या स्प्रेडिंग सीक्वेंस है, जो कि एक PN सीक्वेंस जनरेटर के थ्रू होके आता है। PN सीक्वेंस जनरेटर के लेक्चर्स भी हमने पहले देख चुके हैं। अब जो आउटपुट होगा मल्टीप्लायर का MT, that is basically the spread spectrum signal. Why? Because the narrow band signal BT was multiplied by the wide band signal CT, so the resultant signal will also be a wide band signal, or simply speaking, spread spectrum signal. So the value of MT will be BT into CT. Now this signal is passed through the channel. At the channel, noise will be added to the signal because the nature of noise which we are studying is additive in nature. We study about additive wide Gaussian noise channel. That means the noise introduced at the channel is additive in nature. So finally we get RT. RT is basically equal to MT plus IT. This signal is transmitted and it will be received at the receiver. At the receiver we will use the same PN sequence which we used at the transmitter end. That means we need a proper synchronization between both these PN sequence used at the transmitter end and the receiver end. Now the received signal is multiplied by this PN sequence and the output of the multiplier is ZT, which is passed through a low pass filter or say baseband filter. The work of this low pass filter is that it will remove the signals of high frequency. What is the basic work of a low pass filter? It removes all the signals from a certain it removes all the frequencies of signal which is higher than a certain cutoff frequency, or simply saying it will remove the high frequency components, and at the output we can extract or we will get the original binary NRZ sequence which we transmitted, that is BT. Now let us see the transmitter section is clear. At the transmitter section, MT is given by BT into CT, where MT is the spread spectrum signal which is equals to BT multiplied by CT, where BT is the binary NRZ sequence and CT is the PN sequence or spreading sequence. Now comes the channel section. The spread spectrum signal which is MT is transmitted over the channel, and finally we get RT. RT is equals to MT plus IT. MT was equal to CTBT, so we have kept its value CTBT plus IT, where IT is what? Additive Gaussian noise. Now see the receiver section. Mathematical calculations we are doing. Here ZT is given by RT into CT. So we have written ZT is equals to RT into CT. Just simply we have kept the value of RT here from this equation. RT was equal to CT BT plus IT. Keep here RT equal to CT BT plus IT. Open the brackets and multiply. ZT will be equal to C square T into BT plus CT into IT. Now see, the value of CT is either plus 1 or minus 1. Why? CT हमारा क्या था? CT हमारा PN सीक्वेंस था जो ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में एक सीक्वेंस है, जिसमें हमने ज़ीरो को -11 से रिप्रेजेंट किया था और 1 को +11 से रिप्रेजेंट किया था। तो CT की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, दैट मीन्स या तो +1 होगी या तो -1 होगी। तो अगर हम C² करेंगे तो उसकी वैल्यू हर हाल में +1 आएगी। क्यों? +1 इंटू +1 इज़ +1। अगर मान लीजिए वैल्यू हमारी -1 थी तो -1 इंटू -1 भी क्या होगा? +1 होगा।
यानी सी स्क्वायर टी की वैल्यू विल बी +1 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी, यानी कि जेड टी हमें क्या मिल गया, डी टी प्लस सी टी इंटू आई टी। अब देखिए जेड टी जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसमें बी टी हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, लेकिन उसमें हमें एक और टर्म भी मिल रहा है सी टी आई टी। अगर किसी तरह वी आर एबल टू रिमूव दिस सेकेंड टर्म इन दिस इक्वेशन ऑफ जेड टी, देन वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट आर ओरिजिनल बाइनरी सीक्वेंस और वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट आर मैसेज सिग्नल। तो क्या करेंगे, अब इस सिग्नल को जेड टी को एक लो पास फिल्टर के थ्रू पास करेंगे। तो ये लो पास फिल्टर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करेगा। अब देखिए जेड टी इज इक्वल्स टू बी टी प्लस सी टी आई टी में सी टी जो है वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि जो हम पी एन सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, यानी ये पूरा टर्म जो है हमारा इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। जब ये लो पास फिल्टर से पास होगा तो लो पास फिल्टर विल रिजेक्ट दिस टर्म। Thus, the baseband filter or the low pass filter will pass only the signal Bt and it will attenuate the interference signal which is Ct into It. That means the effect of interference signal is reduced. तो हमारा interference signal या जो noise ऐड हुआ था चैनल पर वो भी रिमूव हो गया और हमें अपना ओरिजिनल सिग्नल भी रिसीवर पर मिल गया। बस यहाँ पर the thing which should be kept in mind is that the PN sequence used at both the ends should be synchronized. That means we have to use the same spreading sequence at both the ends of communication. So this was the general structure of spread spectrum communication system. Now next we will see direct sequence spread spectrum, which is the digital technique of spread spectrum modulation.